अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा जो प्लांट्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा है, खासकर फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ लेट्स सी हाउ रेस्पिरेशन ओकर इन प्लांट्स। सो इन प्लांट्स gases exchange take place through diffusion. What is diffusion? Diffusion is a process where particles move from one region to another, such that it always moves from the medium of higher concentration to lower concentration. What are the gases that are exchanged in respiration of plants? That is oxygen and carbon dioxide. That means oxygen and carbon dioxide are the gases which are involved in the respiration of plants. Now the question is, which part of the plant actually take part in gases exchange? हमने पढ़ा जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैस की ज़रूरत है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन वाज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द प्लांट। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो प्लांट्स है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सो ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। इट नीड्स टू बी थ्रोन आउट। सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are the two gases which are involved in plants during the process of respiration and photosynthesis. Now, question is, which part of the plant actually take part in the gases exchange? मैंने आपको पहले ही बताया कि gases exchange take place through diffusion. So, this diffusion takes place through stomata. जो स्टोमेटा है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टोमेटा दे आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और जो एक्सचेंज ऑफ गैस हैं ये लेंटिसिलस के ज़रिए भी होती है। नाउ व्हाट आर लेंटिसिलस? लेंटिसिलस आर पोरस टिश्यू and they have the intercellular spaces between the cells. और जो गैस एक्सचेंज हैं ये रूट सरफेस के ज़रिए भी होती है, स्पेशली फ्रॉम द रूट हेयर्स, बिकॉज रूट हेयर्स आर डायरेक्टली कंटैक्ट विद द सॉइल एंड द सॉइल इज इनरिच्ड विद द गैसेस लाइक ऑक्सीजन। सो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कैन टेक प्लेस अक्रॉस द रूट हेयर्स। ये हैं वो तीन तरीके जिन तरीक़ों से प्लांट्स में डिफ्यूजन होती हैं। लेकिन जो ज़्यादा डिफ्यूजन होती है या मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज जो होती हैं वो होती हैं थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑक्सीजन है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वो दो गैसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। अब हमें देखना है कि जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन की डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन? वेदर ऑक्सीजन विल मूव आउट ऑफ द प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर और इट विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और वेदर carbon dioxide will come from inside to outside, or how is it? So let's try to understand how this direction of diffusion is decided in plants. The direction of diffusion depends upon the environment conditions and the requirements of the plant. अब यहाँ पर दो terms आ गई, environment and requirements of the plant. So let us look at it. जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वहाँ पे टू मेन प्रोसेस हो जाती हैं इनसाइड द प्लांट।
Number one is photosynthesis and the second one is respiration. So what happens during photosynthesis? In photosynthesis, carbon dioxide combines with water in presence of light and chlorophyll. It forms glucose, that is C6H12O6 plus oxygen plus energy. And what happens in respiration? In respiration, glucose is broken down or oxidized to give carbon dioxide plus water plus energy. So, what do we see in photosynthesis? In this process utilizes carbon dioxide, so this process needs carbon dioxide. Whereas in respiration, it needs oxygen. The product of photosynthesis is utilized by respiration. What is the product of photosynthesis? It is oxygen. And and respiration needs this oxygen. Similarly, the product of respiration is carbon dioxide and photosynthesis needs this carbon dioxide. So dear students, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. शुक्रिया.